Assalamu alaikum. In this lecture, we will cover another topic of differential analysis of fluid flow, which name as Inviscid Flow. The subtopics of this Inviscid flows are Euler's equations of motion, irrotational flow, the Bernoulli equation for irrotational flow, and the velocity potential. So let's begin the lecture. Uh, if you remember, हमने ये equations derive की थी, which are called equations of motion. ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी डिस्कस की थी और इसकी आपकी वीडियोस भी अपलोडेड है. तो इफ़ यू रिमेंबर दिस दीज आर इक्वेशंस आर ड्राइव बाय अज्यूमिंग अ फ्लूइड क्यूब जिसके ऊपर दो डिफरेंट तरह की फोर्सेस ऐड कर रही थी. एक फोर्स एक जो थी वो सरफेस फोर्सेस थी which were sigmas and tau. Sigma were the normal forces and tau were the shear forces. और जो दूसरी फोर्स थी वो बॉडी फोर्स थी जिससे सॉरी जैसे बॉडी का वेट उसको डाउनवर्ड डाउनवर्ड पुल कर रहा है. तो इस इक्वेशन के अंदर आप गौर कर सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड टर्म है वो एम ए लिखा हुआ है. एक्सेलरेशन, दिस टर्म इज एक्सेलरेशन, दिस इज डेंसिटी विच इज मास अपॉन वॉल्यूम. और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये जो तीन टर्म्स हैं सिग्मास एंड टॉस, हैविंग सिग्मास एंड टॉस आर द सरफेस फोर्सेस वेयर एज दिस इज अ बॉडी फोर्स. तो ये हमने ड्राइव की थी इक्वेशन अपनी लास्ट क्लास में. तो इस इक्वेशन में ख़ास बात यह है कि इसमें आपके पास जो सरफेस फोर्सेस हैं वो सिग्मास एंड टॉस एंड आपको अगर याद हो तो सिग्मा सिग्मा फोर्स विच जो सरफेस के ऊपर नॉर्मल लगती है, it tends to pull or push the fluid element, it tends to squeeze it or it tends to actually elongate the fluid particle, whereas the taw जो कि सरफेस के ऊपर पैरेलल लग रही है या सरफेस के अलोंग लग रही है वो क्या करेगी, उसके अंदर एक एंगुलर डिफॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश करेगी या फिर उसमें कुछ रोटेशन प्रोड्यूस करेगी. अ, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने जब हम बात कर रहे थे किसी फ्लूइड पार्टिकल के ऊपर मोशन किस किस तरह से हो सकता है. तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट यू आर क्लियर, इफ़ दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर तो आपको मुश्किल नहीं होगी ये बात समझने में जो हम इनविसिड फ्लोज में डिस्कस करेंगे. तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि सिग्मा जो वो फोर्स है जो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लगती है. तो आप यू कैन इमेजिन के व्हाट वुड हैपन, दिस फोर्स वुड टेंड्स टू स्क्वीज इट. इसको दबा सकती है, कंप्रेस कर सकती है या फिर उसको बड़ा कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, एलोंगेट कर सकती है. जबकि टॉ जो है वो सरफेस के ऊपर लग रही है तो वो उसके अंदर एक उसकी शेप को डिफॉर्म कर सकती है या फिर उसके अंदर एक रोटेशन पैदा कर सकती है. अगर आपके पास क्रॉस डेरिवेटिव्स हैं, क्रॉस डेरिवेटिव जो है वो टॉ की वजह से होते हैं. मतलब डावा यू अपॉन डावा वाई या डावा यू अपॉन डावा जेड या डावा वी अपॉन डावा एक्स, जो ऊपर भी लिखा नीचे लिखा अगर ऊपर यू है तो नीचे एक्स नहीं है बल्कि वाई या जेड है. तो this is the general equation of motion. So moving further from these equation, हम इसको बेस बना के हम आगे बात करते हैं. इनविसिड फ्लो, सबसे पहले इनविसिड फ्लो होता क्या? Shearing stresses develop in a moving fluid because of the viscosity of the fluid. देखिए हम ये बात फ्लूइड मैकेनिक्स वन में हमने आप लोगों ने डिस्कस की थी, पढ़ी थी कि आपके पास नो स्लिप कंडीशन होती है. नो स्लिप कंडीशन का मतलब ये है जब फ्लो जो है किसी सरफेस के ऊपर से पास होता है तो उसके वो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स या वो फ्लूइड पार्टिकल जो सरफेस के करीब हैं वो फ्लूइड सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाते हैं. दे स्टिक विद द सरफेस एंड एज यू गो अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस, एज यू गो अवे फ्रॉम द सरफेस, आपके पास वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है. And that actually makes a profile. And that profile, if you say कि अगर वो u है तो du upon dy is proportional to tau, that's the shear stress. और जब हमें वहाँ पे constant of proportionality आता है तो वो वहाँ पे mu आता है. तो आपके पास शेयरिंग स्ट्रेस होती ही डेवलप उन फ्लोज में है जो कि विस्कस फ्लोज होते हैं. अगर विस्कस फ्लोज है विच मीन्स कि हर फ्लो जो रियल फ्लो है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, ऑयल हो या कोई भी lubricant हो, जब वो फ्लो कर रहा होता है तो उसके अंदर नेचुरली कुछ विस्कोसिटी होती है. सिंस विस्कोसिटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक डेंसिटी एंड स्पेसिफिक हीट एंड एनी अदर मटेरियल प्रॉपर्टी. तो शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप होती है विस्कोसिटी की वजह से. बट व्हाट हैपेंस, we know that for some fluid such as air and water, the viscosity is pretty small. या फिर just it's reasonable to neglect it, ignore it.
हम उसमें विस्कोसिटी को या विस्कस इफेक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। देखें, याद रखिएगा, दो बातें हैं। विस्कोसिटी को हम ज़ीरो नहीं कर सकते, बिकॉज विस्कोसिटी इज़ अ मटेरियल प्रॉपर्टी जो कि मौजूद रहेगी हमेशा, बिकॉज इट्स नेचुरल, मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है। बट जब विस्कोसिटी मौजूद है तो फ्लूइड के अंदर शेयर स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, और शेयर स्ट्रेस बराबर होती है टॉ इक्वल्स टू म्यू डावा डावा यू अपॉन डावा वाई, या डिपेंडिंग अपॉन जो वेलोसिटी आप ले रहे हैं, इट कुड बी डावा वी अपॉन डावा एक्स और डावा डब्ल्यू अपॉन डावा एक्स, व्हाटएवर। बट तो वहाँ पे टॉ जो है वो मौजूद होगी। बट कभी कभी कुछ ऐसे फ्लोज होते हैं जहाँ पे हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, निगलेक्ट क्यों कर सकते हैं? अगर मिसाल के तौर पर flow field in which the shear strength are assumed to be negligible are said to be inviscid, non-viscous and frictionless। जिन flow fields में हम अ, आपके पास इस विस्कस इफेक्ट को इग्नोर करते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस को इग्नोर कर देते हैं, या बहुत नेग्लिजिबल होती हैं शेयरिंग स्ट्रेसेस, तो वहाँ पे उन फ्लोज को हम कहते हैं इनविसिड फ्लो, नॉन विस्कस फ्लो या फ्रिक्शनलेस फ्लोज। मैं फिर रिपीट करूंगा, दीज फ्लोज आर इनविसिड, it doesn't necessarily mean that the fluid has no viscosity। फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी मौजूद है, बट जो फ्लो की टाइप है वो इनविसिड है। फ्लो के अंदर शेयरिंग स्ट्रेसेस नहीं है। ओके, इसको हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेंगे अगली स्लाइड्स के अंदर। मूविंग ऑन, इनविसिड फ्लो में सबसे पहले हम एक बात डिस्कस करते हैं कि इनविसिड फ्लो की पहली assumption ये होती है कि आपके पास जो शेयर स्ट्रेसेस हैं वो नहीं है, देयर आर नो शेयर स्ट्रेसेस, एंड वी assume that the normal stresses sigma xx, sigma yy and sigma zz are equal, and they are all equal and equals to p. P is the pressure at that point which is acting uh, towards the center of the fluid particle. So it's a compressive it has a compressive sense। sigma x, sigma y, sigma z, उस point के ऊपर अगर आप खड़े हैं तो you will feel a pressure being exerted by all the neighboring molecules। तो पहली assumption हमारी ये है कि हम sigma x, sigma y, sigma z को बराबर ले लेते हैं, और वो बराबर हो जाता है p के, with a negative sign as it is towards the center of the cube। आप और कर सकते हैं कि अगर ये सब इन तमाम की डायरेक्शन जो है वो towards the center होगी, तो इन तमाम की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। आप और कर लें कि दिस इज opposite to the positive x-axis, this is opposite to the positive z-axis, this is opposite to the positive y-axis, that is why these all are equal and equals to minus p। Moving further from this, आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई थी, दैट्स द इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसमें अगर मैं टॉस टर्म को एक जीरो कर देता हूँ, these two terms become zero, and sigma x, sigma y and sigma z will be replaced by minus p, right? So this is how the equation will transform। रो जी एक्स, यहाँ पे जो दो टर्म्स थी टॉप वाली टर्म वो इग्नोर हो गई, और यहाँ पे भी इग्नोर हो गई, और यहाँ पे भी गायब हो गई। तो आपके पास जहाँ पे सिग्मा एक्स था वहाँ पी आ गया, सिग्मा वाई था वहाँ पी आ गया, जहाँ सिग्मा जेड था वहाँ पर भी पी आ गया। ओके, दिस इक्वेशंस आर कॉल्ड equations of motion, but these are called modified equation of motion, or they are also commonly referred as Euler equations of motion। These are very important equation, these are pretty these equation really simplified the previous one, जिसके अंदर आपके पास तीन वेरिएबल्स और थे टॉस की शक्ल में। तो यहाँ पे इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो गई, और आपके पास सिग्मा और टॉस रिप्लेस हो, टॉस जीरो के बराबर हो गया और सिग्मा बराबर हो गया सिर्फ पी के। तो अगर आपके पास कोई भी इनविसिड फ्लो है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ज़ीरो है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाली अप्लाई कर सकते हैं, या वी कैन अप्लाई ऑयलर इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड और शेयर स्ट्रेसेस ज़ीरो किन फ्लोज में होती है, हम ये बात अभी बाद में अगली स्लाइड्स में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। मूविंग फर्दर फ्रॉम दिस स्लाइड, uh, another concept which is called irrotational flow। अच्छा, एक और irrotational flows are those flows in the following slides हम irrotational flows और inviscid flows या no sharing stress flows को भी एक साथ relate कर लेंगे, don't worry about that। irrotational flows, if you remember we discussed that irrotationality, condition of irrotationality क्या थी, कि आपके पास ये वेक्टर्स थे ओमेगा z, ओमेगा x, ओमेगा y। these are the z and y and x component of the angular velocities, जिसमें ये हम बात पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप गौर कीजिए कि अगर ओमेगा z, ओमेगा x, ओमेगा y अगर ज़ीरो है तो फ्लो विल बी completely irrotational। तो आपके पास these three conditions should be satisfied in order to have a
completely irrotational flow. Irrotational flow का मुराद से मुराद ये है कि फ्लो का जो फ्लूइड पार्टिकल है that is not rotating in either of the three in any of the three एक्सेस। ठीक है, तो आपके पास जो क्रॉस डेरिवेटिव्स हैं वेलोसिटीज के, डावा वी अपॉन डावा एक्स जीरो है, डावा यू अपॉन डावा वाई, सॉरी डावा वी अपॉन डावा एक्स बराबर है डावा यू अपॉन डावा वाई, एंड सो फोर्थ। ये तमाम जो डिफरेंस क्रॉस डेरिवेटिव है वो बराबर है, जिसकी वजह से आपके पास ओमेगा जेड, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई भी जीरो के बराबर आएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ इरोटेशनैलिटी। ओके, मूविंग फर्दर, इरोटेशनल फ्लोज बेसिकली आमतौर पर होते नहीं हैं। इन रियलिटी दीज फ्लोज do not exist, but some very simple flows can be modeled as irrotational flows. So a uniform flow को हम define करते हैं, uniform flow has a single velocity where v and w are zero and u is also constant, can be considered as our irrotational flow with no velocity gradient. देखें, let's talk about this no velocity gradient. देखिए velocity का जीरो होना और velocity gradients के जीरो होने में फ़र्क है। वेलोसिटी का जीरो का मतलब क्या है कि वेलोसिटी नहीं है या वेलोसिटी किसी एक एक्सिस के अलोंग नहीं है, लेट्स से इसमें वाई में नहीं है और इसमें जेड में नहीं है। बट वेलोसिटी ग्रेडियंट्स का मतलब ये है कि ऑल्दो u इज इक्वल्स टू कैपिटल U, वेलोसिटी ग्रेडियंट्स का मतलब ये है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा अलोंग एनी एक्सिस। अगर मैं इसकी मिसाल ले लेता हूँ तो यहाँ पे व्हाट इज, यहाँ पे क्या है, u, दैट्स द x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, is equals to a constant value. Let's say this constant value is 5 मीटर पर सेकेंड। सो इस पूरी फ्लो फील्ड के अंदर जो पार्टिकल है वो 5 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, और वो जो पार्ट वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। अगर वो चेंज हो रही है अलोंग एनी ऑफ दीज थ्री एक्सेस, तो वहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट मौजूद होगा। तो एक सिंपल फ्लो जिसके अंदर आपके पास v और w है ही नहीं और u जो है वो भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे रोटेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि फ्लो जो है वो रोटेट कर रहा है, बिकॉज वेलोसिटी ग्रेडियंट ही मौजूद नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा, दिस इज अनदर वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड ए रोटेशनल फ्लोज। Usually what happens जब आपके पास, we will discuss this concept in detail in chapter number 9 when we will be discussing external flows of flow over immersed bodies। यहाँ पे आप imagine करें if you have an arbitrary body, इस body के ऊपर से flow हो रहा है, जो flow जो fluid particle इस body से दूर है, we consider them they are approaching this particle with a uniform velocity। मतलब यहाँ पे v और w नहीं है, सिर्फ u है, and all these u values are constant, फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड, लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड। सो इस रीजन के अंदर आपके पास ना कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट मौजूद है, विच मीन्स जब वेलोसिटी ग्रेडियंट मौजूद नहीं है तो कोई रोटेशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म है तो आपके पास टॉस भी नहीं है। आप यूँ समझें कि आपके पास जो हर स्ट्रीम लाइन के दरमियान वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो इनके दरमियान रिलेटिव फ्रिक्शन नहीं है। जब रिलेटिव फ्रिक्शन नहीं है तो विच मीन्स देयर इज नो शेयर स्ट्रेस, विच मीन्स द फ्लो इज इनविसिड। तो फ्लो इस रीजन में इनविसिड है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फ्लो इस रीजन में इनविसिड है जो कि इस बॉडी से भी दूर है, या टेक्निकली आई वुड से दिस रीजन इज द upstream region approaching the upstream region, and this flow is approaching this fluid part, this body। I would repeat again कि इस पॉइंट के ऊपर विस्कोसिटी नॉन जीरो है, विस्कोसिटी यकीनन है इस फ्लूइड की, बट यहाँ पे इन इनविसिड रीजन है, बिकॉज यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी ग्रेडियंट है या रिलेटिव चेंज ऑफ वेलोसिटी बिटवीन टू डिफरेंट स्ट्रीम्स वो जीरो है। सॉरी, that makes this region inviscid। जैसे जैसे as this flow approaches and hit this object, यहाँ पे कुछ regions create होते हैं जिसको हम boundary layer कहते हैं, separation कहते हैं। I'm not getting into the detail of these terminologies, wake and separation and boundary layer, because we will be covering these concepts in detail in chapter number 9। So यहाँ पे आपके पास इनविसिड रीजन नहीं होता, जबकि यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट्स भी होते हैं, यहाँ पे रोटेशन भी हो रही होती है, यहाँ पे आपके पास शेयर स्ट्रेसेस भी होती हैं। तो यहाँ पे विस्कस रीजन है या डोमिनेटिंग विस्कस रीजन है, जबकि इससे दूर दूर जहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट मौजूद नहीं है तो आपके पास ना ही रोटेशन हो रही है और ना ही कोई विस्कस विस्कस इफेक्ट्स डोमिनेटिंग है।
आगे चलते हैं. So what happens, we can actually apply, हम if you remember in chapter from chapter fluid mechanics 1 theory, we can apply the Bernoulli equation in inviscid flow, incompressible, steady and irrotational flow. So हम आराम से Bernoulli को apply कर सकते हैं इस region के अंदर without losing much accuracy or without sacrificing much on the results. तो इस region में आप बिला झिझक बगैर किसी मसले के, without any hesitation, you can apply Bernoulli equation a good cert with a good margin with a good accuracy, right? So moving on. um okay, this is important. This is another topic called velocity potential. अगर आप गौर कीजिए equation number 6 6 5 6.59 6 and 61 659 6 59 60 and 61. यहाँ पे जो रिलेशन है वेलोसिटी का वो डावा v अपॉन डावा x डावा w डावा v अपॉन डावा x बराबर है डावा u अपॉन डावा y के and so forth. तो if this relation exists for an irrotational flow, what would happen, we can assume that if the flow is irrotational, the velocity components can be expressed as a scalar function of pi. Pi is a function x, y, z, and t. If you remember the stream function, this is exactly the same thing, but here we have two more variable, which is z and t, which shows that velocity potential, this phi is called velocity potential. It's a scalar function and has could have थर्ड डायमेंशन एंड फोर डायमेंशन विच इज जेड एंड टी एज वेल. तो जब आपके अब आप गौर कर सकते हैं कि u इक्वल्स टू डावा फाइव अपॉन डावा एक्स v इक्वल्स टू डावा फाइव अपॉन डावा वाई एंड डावा फाइव अपॉन डावा जेड बराबर है w के. जस्ट सिम बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने जाय की बात डिस्कस की थी, बस जाय में खास बात की थी कि जाय या स्ट्रीम फंक्शन इज ओनली एप्लीकेबल टू टू डायमेंशनल फ्लो, whereas this velocity potential of phi can be applied to a 3D flow as well. Okay, now but the first assumption for this velocity potential theory is the flow should be irrotational. So if I substitute these u, v and w in these equations 59, 60 and 61, these equations will be satisfied. You can check you by yourself. तो ये velocity potential कहलाता है phi. एंड सो अगर इसको हम कंजर्व फॉर्म में लिखें या वेक्टर फॉर्म में लिखें तो v इक्वल्स टू डेल डेल ऑपरेटर टाइम्स फाई. डेल ऑपरेटर क्या होता है, डावा अपॉन डावा एक्स डावा v डावा अपॉन डावा वाई एंड डावा अपॉन डावा जेड. तो एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं कि u इक्वल्स टू डावा अपॉन डावा एक्स, v इक्वल्स टू डावा फाइव अपॉन डावा वाई एंड w इक्वल्स टू डावा फाइव अपॉन डावा जेड. तो यहाँ पे हम इसको बंद कर सकते हैं. So for the irrotational flow, the velocity is expressible as a gradient of scalar function. अगर आपके पास flow irrotational है, which means there are no velocity gradients, velocity gradients are equal. So आपके पास gradient of scalar function is scalar function का phi, which could be any mathematical function in terms of x, y and z. उसका अगर आप gradient ले लें तो you will get v. The velocity potential is a consequence of irrotationality and of the flow field. अगर आपके पास velocity potential only exists when the flow is irrotational, whereas the stream function is a consequence of conservation of mass. conservation of mass अगर satisfy हो रहा है तो stream function इसकी कौन सा consequence था, whereas irrotationality की वजह से आप velocity potential को define कर रहे होते हैं. velocity potential जो है वो थ्री डायमेंशन में भी डिफाइन हो सकता है जैसे हमने अभी डिस्कस किया, whereas stream function जो है वो सिर्फ 2D में डिफाइन होता है. आगे चलते हैं. uh, Okay, so we know that in order to conserve the mass, in order to satisfy the continuity equation, we know that the del dot v should be 0. This is the first condition to have a flow to exist. So if I replace v here from this equation 6.65, which is, so I will get del square phi equals to 0. What is del square? This is called Laplacian operator, and it can be written as a square of dava upon dava x, which makes the equation, this equation, if you open it, you will get this equation. This is dava square phi upon dava x square and so forth, right? So this equation actually has two things. One, it satisfies the continuity equation or it satisfies the conservation of mass, and second, it satisfies the condition of irrotationality as it has velocity in terms of phi, and phi only exists when your
when your flow is irrotational, having no velocity gradients or the velocity gradient are equal. So this is called Laplace equation, and this is a partial differential equation, and this type of equation can be applied to different engineering applications or scientific applications. So moving from here, this is we will discuss this equation in detail. Okay, इसका मतलब क्या है? What is the physical meaning of this equation? Um, आगे चलते हैं. Let's move further. Velocity potential. Thus, inviscid. This is no viscous effects. Although the viscosity is there, but the viscous effects can be ignored. Incompressible mean density is constant. Irrotational flow field are governed by Laplace equation. This type of flow is called potential flows. So these flows are called potential flows which satisfy the Laplacian equation, which means Laplacian equation is only valid when you have conservation of mass and you have irrotational flow, right? So these flows are called potential flows. Potential flows are governed by these equations which we discussed in the previous slides, and that is the vorticity is zero, and that makes sense because that's the first condition of to have an irrotational flow. Okay, so let's move on. Let's move on. This is a good example. This is an example of a flow over any arbitrary surface. For example, we will this is let's say you have a surface where you have where you have a spike somewhere on the surface, and when the flow hits the surface, you have two different regions. One region is far from this surface, and one region is nearer to this surface. So you can see the region which is near to the surface, this blue surface is having some you can say some circular motion going on just beside this peak, और यहाँ पे आपके पास velocity gradient मौजूद हैं. So this is called boundary layer. So as I said, I will discuss this boundary layer theory later in chapter number 9. So what happens when you are having a flow which the streamline or the flow which is away from the surface, you can easily apply this equation. This is the Laplacian equation, del square phi equals to 0, because in this region the fluid has no velocity gradient and the flow is not rotating, whereas here flow जो है वो rotate भी कर रहा है और flow के अंदर gradient मौजूद है. तो the region which is nearer to the surface uh, is shown by the shaded region. Here in this region you cannot apply this equation, and this equation is not equals to 0. I will show you again. Uh, Sorry, this region, this equation is not 0 in this region. This is the shaded region, whereas this equation stands valid in the region which is away from the surface. The bump के करीब जो region है वहाँ पे available ये valid नहीं है, उसके बाहर ये valid है. So when you have potential flows, flows are the flows which are usually modeled away from the surfaces. So इसकी जो let's move further. Potential flows again in a cylindrical coordinates, potential flow can be represented as VR, V theta, and Vz. So there is nothing new about it. The theory is similar, but only the relations of VR, V theta, and Vz are different. So don't worry about that. V equals to VR. E represents the unit vector, just like I. Here we represent we replace I with E. ER, E theta, and Ez are the respective unit vectors along r and theta and z axis. So there's nothing new about it as far as the theory is concerned. You can see that Vr equals to dava phi upon dava r, V theta equals to 1 upon r, dava phi upon dava theta, and dava phi upon dava z. And here the Laplacian equation is a bit modified in order to incorporate these Vr, V theta, and Vz. So um, here till now I will give you a recap of what we have covered so far in this lecture. We discussed about the inviscid flows.
The first topic was the equation of motion, जिसमें हमने sigma and tau को eliminate किया था by eliminating taus, because taus जो है वो viscous behavior पैदा करते हैं, या they create viscous effects in the flow. तो taus को हमने ignore किया और sigma को बराबर ले लिया हमने p के, which is the pressure at a point जहाँ पे particle मौजूद है. तो इक्वेशन मॉडिफाई बन गई. जो मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ द मोशन है वो इस तरह नज़र आ रही हैं. इसमें आपके पास सिग्मास एंड टॉस नहीं है, बल्कि सिग्मा की जगह पी है और टॉस एग्जिस्ट नहीं करते. दीज आर कॉल्ड ऑयलर इक्वेशन. फिर हमने बात की रोटेशनल फ्लो की. रोटेशनल फ्लो कौन से फ्लोज होते हैं जिसमें ओमेगा जेड, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई की वैल्यू जीरो होती है, विच मीन्स आपके पास जो क्रॉस डेरिवेटिव्स हैं वो बराबर होते हैं. So this is irrotational flows. जिसमें flow move. So for example, we have a uniform flow where the velocity is not changing in any of the axes, u equals to capital U, whereas v and w are zero. This is a very simple flow. This is not a realistic flow, but some real flow can be modeled as a uniform flow in order to sorry, in order to reduce the difficulty. तो हमने बात की थी कि जब वो रीजन जो इस बॉडी से दूर है वहाँ पे फ्लो यूनिफॉर्म है, u इक्वल्स टू कैपिटल U है, तो यहाँ पे ना ग्रेडियंट है, तो ना यहाँ पे ना यहाँ विस्कस इफेक्ट्स होंगे और ना ही यहाँ पे कोई रोटेशन होगी. वेयर एज जैसे जैसे आप इसे करीब जाएंगे यू हैव विस्कस रीजन एज वेल एज रोटेशन इन द फ्लो. तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है दिस इज इनविसिड रोटेशन इरोटेशन फ्लो रीजन जो आपके पास इससे दूर है. In the inviscid region or the irrotational region, we can apply Bernoulli equation, which is represented by this equation. We all know that. Moving further, हमने बात की थी जब आपके पास irrotational flow है तो हम उस flow को define कर सकते हैं scalar function phi के साथ, which is a function of x, y, z and t, and u, v, w can be represented as a derivative of that uh, function phi, which is called velocity potential. So similarly, we can write in a vector form v equals to del phi, and this equation is only valid when the flow is irrotational. And we discussed the difference between velocity potential and stream function. Velocity potential can be is general three-dimensional flow, where stream function is only two-dimensional flow. The first equation is the conservation of mass. So if you replace the v in terms of phi in the first equation here, you actually modified the equation and now you have a non-linear equation, and that is called a Laplacian operator with a square, and this is called a Laplace equation. um, and furthermore, we said that inviscid, incompressible and rotational flows are governed by Laplace equation, and these types of flows are called potential flows, and which are not only irrotational but they also satisfy the continuity equation as well. uh, Moving further, we discussed that the Laplacian equation cannot be applied to the region which are nearer to a bump or a surface, whereas you can conveniently apply this equation away from the surfaces where do not have where you do not have velocity gradients. Uh, Now this is the cylindrical coordinate representation of the velocity potential, and this is quite similar to, as of the stream functions, so there is nothing new about it. So far we discussed this inviscid flow. If you have any question, please ask me in the Zoom session, and we will be solving some numericals in detail regarding related to this chapter topic, and I will be uploading those files again inshallah. So thank you for listening.